kilonewton per meter cube, and the lightweight mortar should be measured when his strength is less than from 15 kilonewton to 15 kilonewton per meter cube. And the binding materials are used are lime mortar, surkhi mortar, which is replaced by surkhi, and the cement is also used for binding the material, and gypsum mortar can be used in the plastering. The good properties of mortar are mobility and placeability. Mobility means how we mix the mortar with other components, and then how we will place that material in our projects, in our like walls or floors. The good properties of a good mortar are it should be durable, means long life, and it should set quickly, very quickly time. Strength achieved after curing, it means we have to place the concrete and give the water for curing process, then we will achieve the further strength. It should not affect the durability of materials which with it come out into contact. It's mean it should not affect durability, means long life process, how it is durable. And the last is it should be capable of resisting of rainwater. When we place the mortar, the rainwater should be resist in this, it has a capable of resisting of rainwater. The nature of applications are brick laying mortar, finishing mortar. Brick laying mortar is used in bricks. Air finishing mortar, when we finished our project, then we will use the mortar. That process is known as finishing mortar. And the other is special mortar. Special mortar include the fire resistance mortar like aluminum cement. Lightweight mortar. Lightweight mortar is very light in weight, means low grade used. Sound absorbing mortar, that is which is used in Portland cement, gypsum, and it should give us strength to 6 to 12 newton per meter cube. Now we will discuss about the plastering types. What are the types of plastering? As you know, there are two types of plaster. The first one is interior plaster and the second one is exterior plaster. Interior plasters means when we do the plastering in our wall inside our house, that is known as inside plastering, and the outside plastering is outer surface area of our houses that should be plastered in. That process is known as exterior plaster. This figure showing the interior plaster of any house. It means interior plaster can be defined as smooth finish which has a thickness of 6 mm to 12 mm, means interior plaster thickness should be 6 mm to 12 mm, and it is mainly applied, as I earlier told you, it is mainly applied inside apartment for various purpose. Means interior plaster is used inside apartment, inside in our houses, that is known as interior plaster. And the plaster thickness should be, interior plaster thickness should be 6 mm to 12 mm. In this diagram it shows the exterior plaster that is used in our projects like apartments of any buildings. Exterior plaster is a type of plastering that is applied on the building facade, compound wall, etc. It's having a thickness of 18 to 20 mm. It's mean the exterior plaster is used outside surface area of our any apartment in the building, and the thickness is should be 18 to 20 mm of exterior plasters. This is the another example of exterior plaster. See in this photo, the exterior plaster is done by some masons, and it is applied in two coats of 12 mm, and each top coat is usually rough finish with a sand grain texture. Exterior plaster work being of a different composition
and generally known as stucco. Exterior plasters can be made with Portland cement, means we can use we can done the exterior plaster with the using of Portland cement. This is the example that showing the thickness and the some components of the wall. The interior plaster should be 10 to 12 mm and the exterior plaster should be 18 to 20 mm of his thickness. These are the some tools which are used for plastering. The first one is darby, as you shown in figure. Then other is feather edge, hawk, plaster travel, wooden float, steels, plasterboard. These are the tools which are used for plastering. Now we will discuss about how plaster is made. First one is the material used for plastering is cement paste. Cement sand plaster is a layer of cement and sand mortar which is applied over wall made of brickwork or cement block work or RCC wall or RCC column and beam. The proportion which is used is 1:2 is considerable for the plastering process. This is the preparation of cement paste. First we will mix the cement paste with sand. This is that is showing in the figure. And the second, how we place with the help of tool of that cement paste. And the third one is how we will place the cement paste on a wall for a better smooth and durability and for a good strength for our wall. The procedure taken before plastings are: the first one is wash and water the surface for 24 hours before the plaster is applied. It means first we have to wash that surface with water before 24 hours where the plaster is applied. And the next one is fix the reference mark on the walls truly in lines and plumb bob before the starting the process. Then we have to fix the marks on walls. Third, ensure all the edges of the opening are rounded. Check the plaster frequently with straight edge and plumb bob. It's mean we have to ensure that all edges are rounded of that surface and the plastering should be surface there is no ups and down and the edges are straight. And plumb bob is used for paralleling that process of plastering which are used in any wall or in any other remark options. Next point is make sure to fix any leakage or moisture before plastering. We have to sure to fix that leakage. There is no leakage, no moisture before plastering. The next is ensure that the wall are completely dried at 24 hours before plastering. Also keep the room at 55 to 70 degree temperatures during plaster or till the plaster set completely. This is the complete procedure after plastering is used. And next is the what are the common defects of plastering. The first defect is cracking, efflorescence, falling out, blowing or blistering. Crackings means if we are using high grade, it should be the plaster should be cracked. Efflorescence, there is no proper setting of plastering. There is, if we will use more cement or more sand, it means efflorescence will occur. And falling out, we will not give the proper curing to the plastering. It should be falling out from that surface. This figure showing the defect of plastering. Efflorescence is also included and the blowing is also occurred in our plaster. Cracking is also occurred and falling out is also occurred in this photo. It's mean these pictures shows the defect of plastering. These are the some tips
and minimize or avoid the defect. First one is the we have to carry out the plastering with skilled mason. We have to use the skilled mason for plastering. Maintain the bond of brick works properly. We should maintain the bond of brick properly, like in straight line there is an also header and stretcher. Remove the fluorescence of brick by rubbing brushes and wash with clean water. Before using that brick, we have to wash the brick with clean water. Use the brick of superior quality. We have to use the bricks of superior quality, means good quality of brick should be used. Make the water used for plastering free from salt. While using the water in plastering, we have to ensure the water should be free from salt. Next is the plaster surface with enough water so that it may not absorb water from plaster, and provide damp proof at convenient place in the building. After completing the plaster process, then we will go for tiles, and these are the pictures of tiles, and we will also discuss about the classification of tiles. These are the examples of tiles like ordinary tile, tractor tiles, marble tiles, which is used after the plastering process. What is tile? As you have know about the tiles which we used in our houses, uh, in any building or in any apart, and the tile is a kind of floor finishing. It is mainly used for decorative purpose. Tiles are generally attached to wall and floor. Tile should be attached over plaster in case of wall, but in our country this rule is not maintained. It means when we use the tile is used for good decorative purpose. It is also at when we use the tile, it is also attractive, it give a good appearance, and tiles are generally attached to wall and floor. Tile should be attached over plaster, but in our country this rule is not maintained. This figure shows how to fix tile after plastering in our apartments, in our buildings, yeah, or in civil engineering project. This rule is maintained only for floor. On wall, tiles are attached by gradient, means cement paste with the help of, and the ratio of cement and sand for wall is 3 is to 1, means 3 bag of sand and 1 bag of cement, and the floor is 4 is to 1. This rule is not maintained, but it is also applied for floor. After attaching tile, it should be kept for 12 hours, means when we fix the tile, it should be kept for 12 hours for drying. The width of grade line is about 1 inch for wall and 1 into 1.5 for floor if there is no slope. How we will fix tiling on a plaster? The figure shows tile is like fixing on a plaster. Adding tiles to a room is a fantastic way to create a personal statement through a personal design, and will certainly help refresh a room while protecting interior wall in the process. The preparations are: mark out your guideline, then apply, then laying the tiles on that grouting area. These are some precautions we should have to take before the fixing the tiles on a plaster. When we use mortar in our construction, it is compulsory we have to fix the grades, how to mix the components of the materials of mortar, and we have to maintain that grades of mortar are used in our construction. So the grades of mortars are mm 0.7, this is the grade name. Mm mixed mortar 1.5, is mixed mortar, 0.7 is the grade name, like mm3, mm5, mm7.5. mm means mortar mix, 0.7
we have to mix 1 bag cement and 8 bag cement, and mm 1.5 we have to mix 1 bag cement and 7 bags sand. These are the grades of mortar, and the last column showing the compressive strength at 28 days in Newton per mm square. The compressive strength means that grade of mortar how much give us strength after 28 days. Like 0.7 grade give us strength between 0.7 to 1.5. This is the compressive strength of 28 days of mm 0.7 grade. Mm 1.5 gives us 1.5 to 2.0 Newton per mm square compressive strength after 28 days. So these are the other grades like mm5, mm7.5. mm7.5 give us compressive strength after 28 days should be 7.5, or it is above from 7.5 Newton per mm square. Now I will tell you in depth the classifications of mortar. The different types of mortar used for plastering are like as I earlier told, cement mortar, and then lime mortar is also used for plastering. The third one is composite mortar. First I will tell you about the cement mortar. Basically the cement mortar is a mixture of cement, fine aggregate like sand and water is taken in proper proportion, while cement and fine aggregates are properly mixed in required proportions in a dry state or on wet light platform. It means in the dry state, the mixture is made up and down with the help of farva. Then the water is added and added to the mixture, and after mixing it up and down, and a homogeneous paste of cement mortar is formed. It clearly means that cement mortar does not require grinding and pounding, and it is needed in the lime mortar used for masonry work of stone and bricks. This mortar is easily used for plastering, and it is also used for repair work, grouting and paling. Cement mortar require proper curing to achieve the proper strength and durability. In this type of mortar, the ratio of sand to cement varies from 1:2 to 6 or volume depending on the strength and the importance of the work. These are the some properties which is used in plastering of cement mortar. Now we will discuss about the lime mortar. What is lime mortar? Lime mortar is a mixture of lime, sand and water in appropriate proportion, prepared in two ways such as grinding and pounding. The grinding method of preparing lime mortar is more efficient than pounding. In the pounding method, like lime and sand are mixed in dry state, and the mixture is placed into pits, and then water is added to the mixture by repeatedly poured ups and down. It means the required amount of water is added at equal intervals. When the mortar mass become continuous, it taken out of the pits to be used in masonry work. The third one is composite mortar. What is composite mortar? The lime mortar is first prepared by grinding or pounding method. Then required quantity of cement is added. Then the complete mass is thoroughly turned up and down as to get a homogeneous paste. Thus, composite mortar or gauged mortar is a mix of lime mortar and cement taken in appropriate proportion. Cement is added to lime mortar to increase the strength of lime mortar. The process of adding the cement into
lime mortar is termed as gauging. The gauge process is useful to improve the quality of lime mortar and to achieve early strength. Due to this gauge process, the lime mortar become more strong and economical dense. The proportion of cement to lime by volume is about like 6 to 18 time. These types of mortar can be used for bedding and thick wall brick masonry work. Now I will tell you the function of various types of mortar. The first function should be to tie the building material such as bricks and stone into a solid mass. Second point is the for pointing and plastering on exposed surface of masonry. They also create a uniform and soft bed layer for construction unit and to make pipe joint to improve the general appearance of the structure. Also to prepare the mold of coping, corbel, corning, etc. to serve as the cavity to hold the coarse aggregates. So the final conclusion of using these types of mortars are: the mortar is a paste prepared by adding the required amount of water to a mixture of binding materials such as cement or fine aggregates used to bond a masonry or other structure units. Then we do the plastering. They will give plaster give us a smooth surface and avoid the catching of dust in our wall. It's appear very good look. It is also protect the wall from rain, water, or any other atmospheric agencies, and it is also protect our wall from like fungi and other particles which are present in the climate or in our atmosphere. As you know, sand is used for plastering and it is also used in concrete. The new process that bulking of sand. What is bulking of sand? The bulking of sand, the presence of moisture means water in sand increase the volume of sand is known as bulking of sand. It's mean the presence of moisture or water in sand increase the volume means increase the weight of the sand is process is known as bulking of sand. The good properties of sand are it should be free from vegetables like grass, etc. It should be free from moisture, should be free from free stones and other particle fines. These are the good properties of a good sand which is usually preferred in mortar for the plastering process. What is the function of sand in mortar? The function of sand is mortar to setting the component of the material which is used in mortar. The first pointing setting, then it is also provide a better strength, and the third it also cover the surface area and it also protect from shrinkage and it also protect from bulking of sand. It means the function of sand provide a greater role in the plastering process. It give better strength. It is quickly setting with other component. It also cover the surface area and it is also protect from shrinkage. Now the what are the classifications of mortar? Mortar or classification are as under: what is then bulk density? The formula of bulk density is weight of dry sand upon total sand of volume is known as bulk density, and the heavy mortar strength is 15. Yeah, good morning to everyone. So today we will discuss about our new topic. That title name of topic is types of brick and mortar. So today we will discuss upon
about brick types of brick and their bond. There are different types of brick. First one is structure brick, header brick, and the soldier brick. What is structure brick? Structure brick is a brick laid with the longest side exposed. मीन्स के स्ट्रक्चर ब्रिक वो ब्रिक होती है कि जब हम उसको कहीं भी प्लेस करते हैं तो उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो सामने नज़र आती है, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये एक हमारी क्या है, स्ट्रक्चर ब्रिक है। फिर उसके बाद आता है अपना हेडर ब्रिक। हेडर ब्रिक इज़ अ ब्रिक लेड विद द स्मॉलेस्ट एंड एक्सपोज टू द वेदर। हेडर ब्रिक जो होता है उसमें हम ये एक्सपोज करते हैं, कहीं भी उसको हम लेट डाउन करते हैं या कहीं भी उसको हम प्लेस करते हैं तो उसका जो स्मॉलेस्ट एंड होता है उसको एक्सपोज किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ सोल्जर ब्रिक। सोल्जर ब्रिक वो ब्रिक होती है कि जिसको हम कहीं भी लेट करें वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम उस ब्रिक को लेट करेंगे तो वो हमारी ब्रिक क्या हो जाएगी, सोल्जर ब्रिक हो जाएगी। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, स्ट्रेचर ब्रिक को किस तरह लेट करते हैं, हेडर ब्रिक को किस तरह लेट करते हैं और सोल्जर ब्रिक को किस तरह लेट करते हैं। कहीं भी हम कोई भी दीवार बना रहे हैं या कोई भी किसी प्रकार का काम कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, तो उसमें स्ट्रेचर ब्रिक को इस तरह से लेट किया जाता है, हेडर ब्रिक को इस तरीके से लेट किया जाता है और सोल्डर ब्रिक को वर्टिकली लेट किया जाता है। क्लियरली डायग्राम में बताया गया है कि हेडर ब्रिक जो है वो किसी भी वाल में हम कैसे यूज़ करते हैं उसको दिखाया गया है। स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करते हैं, सोल्डर को कैसे यूज़ करते हैं, बॉन्ड कैसे इनमें बनता है। जब भी हम कोई भी वाल बनाते हैं तो इसमें हम हेडर को अलग टाइप से यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर को उसको अलग डायरेक्शन में यूज़ करते हैं और जो अपनी सोल्डर होती है उसको हम अलग तरीके से प्लेस करते हैं। सबसे पहले हेडर को देखिए कि उसमें जो बॉन्ड कैसे बनाया जाता है ब्रिक्स का। क्यों कहीं भी हम कोई भी अगर लेयर बना रहे हैं तो उसमें जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम सामने रखते हैं और उससे क्या होता है कि उस वाली टाइप्स को हम स्ट्रेचर कहते हैं। और फिर उसके बाद हेडर होता है और शोल्डर होता है। अब ये तीनों टाइप्स जो हैं ब्रिक्स की, ये हम जब भी वाल की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं ताकि एक ब्रिक्स के वाल जब हम बना रहे हों तो उनकी आपस में एक प्रॉपर बॉन्डिंग हो, जिससे कि उनकी अपीयरेंस अच्छी हो, उसकी टेक्सचर अच्छी हो, ताकि हमारा जो हम वाल बनाएं वो एकदम पैरेलल रहे। इसलिए हम हेडर का यूज़ करते हैं, स्ट्रेचर का यूज़ करते हैं और शोल्डर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि हम ब्रिक्स के जॉइंट की फॉर्मेशन कैसे करते हैं या उनकी जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे उनको कैसे आपस में बिछाने के बाद उनको कैसे जॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रो में है वो हेड जॉइंट है कि दो अगर कहीं से हम कहीं वाल बना रहे हैं तो उनमें इस टाइप का अगर हम जॉइंट आता है या इस टाइप का हम जॉइंट डालते हैं तो उसको हेड जॉइंट बोला जाता है। फिर उसके बाद उसी फिगर में हम देख पा रहे हैं कि बेड जॉइंट को किस तरह से ड्रा किया हुआ है। ये सब जो हैं ये जॉइंट्स जो हैं और ये जो हेड जॉइंट है या बेड जॉइंट है, ये हम जब भी कोई भी वाल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो हैं अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में तो उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद स्ट्रेचर बॉन्ड को हम थोड़ा डीपली अगर देखें तो स्ट्रेचर बॉन्ड का क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर हम इसको हम यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ करने के कारण क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रेचर बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड entirely comprises of stretcher bricks set in a row that are offset by half a brick. Most common bond in modern time can consist of one layer, two layer or two layer with a gap in between. The main advantages of this technique is that it allows wall with both faces visible and can be used for domestic low height wall where the part of the structure above is built of a lighter frame material such as glass to be built using low cost brick that have only two fair faces. तो स्ट्रेचर बॉन्ड को हम क्या करते हैं कि बेसिकली ब्रिक्स में यूज़ किया जाता है। किसी भी रो के अंदर इसको हम ऑफसेट लेके उसका हाफ ब्रिक का यूज़ करना, उसको हम पहले स्ट्रेचर बॉन्ड करते हैं। ये बहुत ही कॉमन बॉन्ड है मॉडर्न टाइम में। किसी भी लेयर में हम इसको यूज़ करते हैं। दो लेयर के जो गैप है उसको भरने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
और इस जो है इसका मेन जो फ़ायदा है इस टेक्निक का, उससे क्या होता है कि हमें जो हमारी वाल है उसमें जॉइंट हमें सामने नज़र आता है, उसमें कहीं कुछ होल्स या क्रैक्स नहीं पड़ते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारी वाल जो है एक फ्रेम स्ट्रक्चर की तरह दिखती है, जैसे कि एक प्रॉपर ग्लास की तरह जैसे दिखता है। और उसमें क्या है कि जो स्ट्रेचर बॉन्ड है ये हम अपनी ब्रिक्स वाल के जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो तो उस टाइम इसको हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका जो मेन मुद्दा रहता है, जो मेन यूज़ करने का कारण रहता है कि एक तो हमारी वाल सीधी रहती है, जॉइंट्स हम यूज़ करते हैं तो उससे होल को प्रिवेंट होते हैं, क्रैक्स नहीं पड़ते हैं, और इसकी जो हमारी वाल है उसकी अपीयरेंस बहुत ही अच्छी होती है, एकदम सीधी और पैरेलल रहती है। इसीलिए हम स्ट्रेचर बॉन्ड को अपने ब्रिक्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हेडर बॉन्ड। Header bond is also known as Spanish bond, was very common bond for the bearing wall. It is composed of header brick set in row that are the offset half a brick, which produce a solid easy to lay bond, which is the useful when building circular work. It is the most used bond in the historical Spanish brick construction. In picture you have show us the हेडर बॉन्ड। तो हेडर बॉन्ड क्या होता है कि हेडर बॉन्ड को हम स्पेनिश बॉन्ड बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पुराने टाइम से जब भी हिस्टोरिकल स्पेनिश ब्रिक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था तो उस टाइम ये यूज़ होता था, तो इसका नाम वहाँ से इस पड़ा स्पेनिश बॉन्ड। अब ये क्या है कि इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो भी अपनी वाल है, वाल एक तो सीधी पैरेलल रहे और इसको एकदम सॉलिड रहे। और ये जब हम यूज़ करते हैं हेडर बॉन्ड का तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है किसी भी सर्कुलर वर्क के लिए। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि इस टाइप का जो भी हम ब्रिक्स को यूज़ करते हैं कहीं भी वाल में, तो उस वाल को जो भी जैसे स्ट्रेचर हो गया या फिर हेडर हो गया तो ये साइड जो शो करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेडर बॉन्ड बोलते हैं, जो कि ये बहुत ही पुराना है। स्पेनिश ब्रिक कंस्ट्रक्शन के टाइम से ये यूज़ होता हुआ आ रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो जैसे कि फिगर में सामने शो हो रहा है, पिक्चर शो हेडर बॉन्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि ब्रिक्स बनती कैसे है, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं या हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में कुछ हम थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है कि जब हम कोई भी सैंपल लेके ब्रिक्स को स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक उसका, चाहे वो ओवन में ड्राइंग करना हो या डिगिंग करना हो या मोल्डिंग करना हो, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले मटेरियल की प्रिपरेशन होती है, फिर मोल्डिंग होता है, फिर ड्राइंग होता है और फिर फायरिंग होता है। तो मटेरियल प्रिपरेशन में सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेज है उसमें हम क्या करते हैं कि हम कहीं से भी मटेरियल जो भी है क्ले है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, उसको साफ़ करते हैं अच्छे से। ठीक है, उसमें से घास वगैरह को साइड करते हैं, तो एकदम फाइन पार्टिकल्स बनाते हैं उसको। क्ले प्रिपरेशन में क्या किया जाता है कि क्ले इज़ प्रिपेयर्ड बाय क्रशिंग एंड आर ग्रेडिंग एंड मिक्सिंग विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सैंड, एश एंड लाइम until it is of a uniform consistency. Water may be added to increase plasticity, a process known as tempering. In such cases, chemicals such as barium carbonate is added to reduce the problem of efflorescence, crystallization, damage or chemical attack of the mortar. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्ले को हम कैसे तैयार करते हैं, कहीं से भी हम इसकी क्रशिंग करते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं, या मतलब क्रश करना, कहीं से खोदना या डिगिंग करना, फिर उसको हम स्मॉल क्वांटिटीज़ की सैंड से हम उसमें मिक्स करते हैं साफ़ करने के बाद, फिर ऐश और लाइम को यूज़ करते हैं एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी के लिए। फिर फर्दर उसके बाद हम क्या करते हैं कि पानी में उस पानी को उसमें ऐड करते हैं ताकि उसकी जो है वो प्लास्टिसिटी लूज़ हो जाए। उस पूरे प्रोसेस को हम टेम्परिंग कहते हैं। फिर उसमें कुछ केमिकल यूज़ करते हैं सच एज़ बेरियम कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं ताकि वो क्या करे कि जो हमारी एफ्लोरेसेंस हो गया, मतलब जो भी उसमें कुछ घास वगैरह से जो बच गया हो या फिर कुछ डैमेज होने का या केमिकल अटैक से उसे क्या करता है, वो हमें प्रिवेंट करता है। बेरियम कार्बोनेट को हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करे।
फिर सेकंड जो स्टेजेस है वो आती है वेदरिंग। अब वेदरिंग होता क्या है, द साइल इज लेफ्ट इन हीप्स एंड एक्सपोज टू वेदर फॉर एट लीस्ट 1 month इन केस वेयर सच वेदरिंग इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर साइल। द soil is done at least twice and it is ensured that the entire soil is wet throughout the period of weathering. The purpose of weathering is disintegrate big boulders of clay under the action of atmospheric agencies to make it a uniform mass and also to eliminate the impurities which got oxidized. तो वेदरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हम अपनी क्ले को साफ़ करने के बाद उसको सूखने के लिए रखते हैं, उसमें से क्या हो जो भी कुछ फंगाई वगैरह हो या फिर कुछ बाकी केमिकल चीज़ें हों, जैसे कि उसमें कुछ घास वगैरह हो गया या कुछ थोड़ा बहुत उसमें पत्थर वत्थर हैं, छोटे छोटे पेबल्स जो होते हैं, उनको साफ़ करने के बाद हम क्या करते हैं कि अपनी साइल को कहीं ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ से वेदरिंग इसकी अच्छी हो, उसका अच्छा से एक्सपोजिशन हो। फिर उसके बाद हम उसको एटलीस्ट 1 महीने के लिए ऐसा ही प्रोसेस करते हैं। फिर उसके बाद हम उस पर क्या करते हैं कि उसको अपनी एटमॉस्फेरिक एजेंसी से हम प्रिवेंट करते हैं ताकि उसके मास पे ये कोई फ़र्क ना पड़े, कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह कोई उसके साथ अटैच ना हो, जिससे क्या हो कि उसकी शेप में कोई फ़र्क आए या उसकी कोई भी उसमें इम्प्योरिटीज़ पड़ने के बाद वो किसी के साथ ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो इस पूरे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग प्रोसेस। थर्ड स्टेज में हम टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग बेसिकली वो होता है कि जब हम अपने इसमें क्ले में पानी को ऐड करते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, तो फिर उसको हम मोल्डिंग के लिए जाते हैं। कोई एक मोल्ड होता है ब्रिक के साइज़ का, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको सॉइल की कंपोजिशन करते हैं, उसमें फिर जो भी है अकॉर्डिंग टू द जो हमारा BIS है उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं, और कितने डिग्री पे उसको वेटनेस करना है या फिर कैसा उसको शेप देना है उस मोल्ड के द्वारा। तो इस पूरे प्रोसेस में हम टेम्परिंग करते हैं, एक प्रॉपर उसको शेप देते हैं, जिससे क्या हो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ होके निकले। कंपोजिशन होने के बाद उसको हम मॉडिफाई करते हैं। देन टेम्परिंग होने के बाद हम उसको फिर एक ओवन में रखते हैं ड्राइंग के लिए। जब जो भी अपनी वेट यूनिट ब्रिक होती है उसको हम ड्राइंग करते हैं। एक स्पेसिफिक अपने पास रूम होता है जिसमें टेम्परेचर भी होता है ताकि वो अच्छे से ब्रिक्स को क्या कर पाए, ड्राइंग करे, और ड्राइंग होने के बाद एक अच्छी वो स्ट्रेंथ दे, चाहे वो सिंपल ब्रिक हो, नॉर्मल ब्रिक हो या फिर इंजीनियरिंग ब्रिक हो, ताकि एक प्रॉपर हमें उसे स्ट्रेंथ निकले, एक अच्छा बॉन्ड निकले, ताकि उसमें कुछ टेक्सचर फेलियर वगैरह ना हो। जब तक प्रॉपर ड्राइंग नहीं होगी तो हमें ब्रिक वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगी, और टेस्टिंग में भी उसका पूरा जो डाटा है वो पूरा फेल होगा। तो ये हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो ब्रिक्स है वो अच्छे तरीके से सूखने के बाद ही हम ओवन से निकालते हैं। Drying is essentially evaporation of moisture either in a normal atmosphere or with controlled humidity and temperature. The second point is drying is done prior to burning of brick. The purpose is to reduce the tendency of brick to desert or crack while burning. Drying is slow, otherwise crack may develop on its surface. The process is usually take a number of 3 to 10 days. For artificial drying, it is done by drying bricks in chamber or tunnel. Hard flue gases may be used to heat these chamber or tunnel. Temperature is usually 120 डिग्री एंड ब्रिक गेट ड्राइड इन 1 to 3 days। तो बेसिकली ड्राइंग करने का हमारा जो मेन मोटिव ये रहता है कि जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है वो ऑपरेशन हो जाता है, ह्यूमिडिटी से वो कंट्रोल हो जाती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से। ड्राइंग से क्या हो जाता है कि जो ब्रिक की टेंडेंसी है वो एक अच्छी शेप में आ जाती है, उसको रिड्यूस करता है और भरने जलने से उसको बचाता है। धीरे धीरे इस प्रोसेस को हम, ड्राइंग जो है वो एक स्लो प्रोसेस है जो कि 3 से 10 दिन का टाइम लेती है, और 120 डिग्री के टेम्परेचर पे एक अच्छी खासी ब्रिक ड्राई होके हम फिर उसको बाहर निकालते हैं। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट MCQ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैंड लाइम ब्रिक्स आर मेड बाय मिक्सिंग। ऑप्शन है आपका क्ले, सीमेंट पेस्ट, बोथ हैंड बी, सैंड एंड फ्लाई ऐश। कि अपना जो सैंड लाइम ब्रिक होता है वो किसको मिक्स करने से बनता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सैंड के साथ क्या मिक्स करेंगे कि सैंड लाइम ब्रिक बनेगी, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सैंड एंड फ्लाई ऐश। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम। कि कंक्रीट वाली ब्रिक्स जो हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कि कंक्रीट ब्रिक्स किससे बनता है।
इसके ऑप्शन है आपके फ्लाई ऐश, क्ले, सॉलिड कंक्रीट या ऑल ऑफ दी अबो। अब कंक्रीट का ब्रिक है तो वो कंक्रीट से ही बनेगा, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सॉलिड कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है common burnt clay brick are formed by pressing in a mold and then bricks are dried and fired in a kiln. Is it true or false? के जो भी एक ब्रिक है हम उसको एक प्रेस करने से या मोल्ड में रख के या फिर उसको ड्राई करके ओवन में अच्छे से थोड़ा सा उसको हीट पे रख के किलन में, क्या ये पूरा जो हम प्रोसेस करते हैं ब्रिक्स की फॉर्मेशन में, ये सही है या गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल सही प्रोसेस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ गुड ब्रिक परसेंटेज ऑफ सिलिका लाइज बिटवीन, कि जो एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है उसमें सिलिका की परसेंटेज कितना होता है? तो हमने ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो सिलिका की परसेंटेज कितनी होती है, उसमें ऑप्शन है आपका 10%, 20%, 60% और 50%। द करेक्ट आंसर इज़ 50%, जो कि सिलिका की एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स में सिलिका की जो परसेंटेज होती है वो 50% होती है।